My name is Dr. Shokat, consultant nephrologist in this hospital. So today again we will talk about blood gases and in the anion gap, and the second was mainly regarding the buffer system. Now I will talk about these topics where my main focus would be understanding the oxygenation in the tissue and partial pressure oxygen and saturation. So I will start with this slide. These are the normal ranges, and you can see would be regarding this oxygenation, partial pressure oxygen, oxygen saturation, and these are the same terminologies and blood gases taken from the arterial, arterial blood gases, the partial pressure oxygen, partial pressure carbon dioxide, and bicarbonate is calculated. So let me start with some backgrounds to see the basis of saying the partial pressure. I would start with the air envelope surrounding our atmosphere, which is composed of mainly nitrogen, 78%, and followed by the oxygen, and then very little, 1%, less than 1% argon, and including that carbon dioxide. If we see in the slide, so the air has a pressure applying all the element living on Earth. So that air is just envelope surrounding the Earth. But the more closer you are with the Earth, the more pressure you will feel on that, and the low pressure of the air at the high altitude. At the sea level, the pressure is measured as 760 millimeter mercury. So already we talked about this air envelope known as atmosphere. Same slide I have shown over here. You can see the pressure at the sea level in kps 100, and while you go altitude, the Mount Everest, so it's reduced to 33 kPa. Its max millimeter mercury is 247, while we have known it is 760 at the sea level. So if you understand this pressure with this experiment, it will help us. This bottle was sealed at the top, about 14,000 feet, where the air pressure, atmospheric pressure is lower. So that was tight over there, and when that bottle dragged towards down at the 9,000 feet. So this is partially collapsed because the more closer you go to the earth, the more pressure you feel. So the pressure is applying everything. So this is partially collapsed, and while it reach at the level of 1,000, it is almost completely collapsed. So this the same thing we have just discussed, the air envelope producing the 760 millimeter mercury pressure, and in terms of individual gases, 600 contributed by the nitrogen, 160 by the oxygen, 21% basically, and a very small amount is contributed by the partial pressure of carbon dioxide, 0.3%. So it makes 0.2 millimeter mercury. Now 160, when we inhale into the alveoli, they're reduced to 102 or 100, you can say. So that is possible because of the humidification, because of the water vapor pressure. The air goes in, and the beyond the trachea, there's the exchange of the inspiration expiration gases, which causes decrease in the partial pressure oxygen around 100. The partial pressure oxygen from nose to alveoli, so reduced from 160 to 100 millimeter of mercury, you can see over here. So this slide shows the partial pressure oxygen dryer. We already discussed 160 and 159. When reached to alveoli, and when arterial blood 95, then the venous 40. Practically हम देखें, when we draw a sample of blood gases, sometimes it's mixed, sometimes it's venous. So that guided by this. Typically, the venous gases contain 40 partial pressure of oxygen. Then we get in between, that might be the mix. And this is the oxygen saturation site. We have taken a typical hemoglobin molecule from, that present red blood cells, having is composed of the heme and globulin, and four sites, that's iron atom, which combine with the oxygen,
and here you can see the oxygen binding size. So 1 gram hemoglobin carry 1.34 milliliter of oxygen, and if someone having a hemoglobin of 15 gram, so he would carry oxygen 20 milliliter. तो वो जो बंदा है बंदी जो है वो तकरीबन 20 ml ऑक्सीजन व्हीकल में लेके सर्कुलेशन में बॉडी की सर्कुलेशन घूम रही होती है घूम रहा होता है तो when somebody has a hemoglobin of half of that somebody anemic wo you can assume how reduced amount of oxygen would be going through the body and the tissue hypoxia would be produced which has its own consequences. We have known कि जब ऑक्सीजन हमने इनहेल किया एल्विलाई में आया आर्टेरियल ब्लड में आया तो what is then beyond? So arterial blood में 98% bind to the hemoglobin. We have just discussed the size and 2% dissolve, which is known actually partial pressure. That's very important slide. And what we see the saturation by pulse oximetry that signify this oxygen and that again this oxygen is related with that too. So 2% is dissolved and 98% is bound, which is reversible. And you can see in here this is known by the pulse oximetry and this known by the blood gas sample. What is the relationship between partial pressure of oxygen and the saturation of oxygen? Both are different but related measure of arterial blood gases. Oxygenation and partial pressure of oxygen in the artery is a measure of the pressure exerted by a very small fraction, 2% blood plasma. 2% dissolve होती है, that's actually partial pressure of oxygen and जो saturation arterial oxygen reflect the remaining 98% of total oxygen out. So blood oxygen status, we can say the partial pressure of oxygen and saturation of oxygen are surrogate of oxygen status, which is reduced in anemia, of course, and consideration of the hemoglobin concentration as vital, consideration of the partial pressure of oxygen and saturation. क्योंकि जब खून की कमी होगी जब एनीमिया होगा तो टोटल ऑक्सीजन भी कम होगा क्योंकि वो बाइंड भी कम होगा लेकिन दैट वुड बी रिफ्लेक्टेड बाय पल्स ऑक्सीमेट्री द नॉर्मल द PO2 वुड बी नॉर्मल बट हीमोग्लोबिन कम होने की वजह से टोटल ऑक्सीजन कंटेनिंग कैपेसिटी बॉडी में होगी कम होगी और टिश्यू हाइपोक्सिया अपनी जगह पे होगा। एक स्टडी हुई थी जिसमें देखना चाहा कि आर्टेरियल ऑक्सीजन सैचुरेशन जो मेजर पल्स ऑक्सीमेट्री पे की जाती है एंड जो आर्टेरियल ब्लड गैसेस अमंग पेशेंट जो इंटेंसिव केयर में होता है उसकी क्या एक्यूरेसी है जो पल्स ऑक्सीमेट्री जो नॉन इन्वेसिव मेथड है ये उसका जो ऑब्जेक्टिव था तो उसमें देखा गया कि पल्स ऑक्सीमेट्री जो है वो हाई एक्यूरेसी है इन एस्टिमेटिंग ऑक्सीजन सैचुरेशन इट्स मोर देन 90% while if this less than 90 then there's a doubt. So when it comes pulse oximetry gives this reading in whatever the number of patient that is more accurate but once it is less than 90 it's not that much accurate, not the entirely very important but it has significant role. Now if I ask the question is oxygen saturation of 100% always normal then no. Why no? क्योंकि ये डिपेंड करता है कि FiO2 कितना है जैसे हम यहाँ पे the open air we taking 21% oxygen then it comes partial pressure oxygen 100 that's fine. The FiO2 अगर 50% है boldly भी है तो that's not good. So that's ये भी उसी तरह से दो पेशेंट को लिया गया एक रूम एयर पे एक मैकेनिकल वेंटिलेशन पे है रूम एयर पे जो पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन 60 है मैकेनिकल वेंटिलेशन 90 है तो यहाँ तक देखें तो ये 90 वाला अच्छा पेशेंट है लेकिन अगर FiO2 देखें तो इनको 50% मिल रही है फिर जो रेशियो बनेगा वो कम है which is more important to ratio more important to see and the normal values अगर देखें तो 3 ये रेशियो जो होना चाहिए पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन बाय FiO2 ये 300 to 500 होना चाहिए और जब 300 से कम होता है तो दैट इंडिकेट एब्नॉर्मल गैस एक्सचेंज और 200 से भी कम है तो सीवियर हाइपोक्सीमिया or patient whose partial pressure 60 while receiving FiO2 50% has a ratio of 120 which is severely impaired. इस स्लाइड में हमने देखा देख रहे हैं कि इसका रिलेशन क्या है सैचुरेशन ऑक्सीजन के साथ पार्शियल प्रेशर का तो ये टिपिकली 60 अगर PO2 है तो दैट डिनोट्स के सैचुरेशन 90 है और ये जो उनकी डिफरेंट रीडिंग्स में डिफरेंट सैचुरेशन को डिनोट करता है। इसकी अहमियत एक ये है कि अगर किसी को मैं ऑक्सीजन दे रहा हूँ और वो ऑक्सीजन चाहे उसको ज़रूरत कम है लेकिन ज़्यादा मिल रहा है तो सिर्फ पल्स ऑक्सीमेट्री पे हम देखेंगे तो वो एक जगह पे आके रुक जाएगी ये 9800 तो हो सकता है कि वो जो अगर 10 लीटर किसी को ऑक्सीजन मिल रही है वो 100 ही दिखाएगा अगर ज़रूरत 5 लीटर की है 5 लीटर दो तब भी वो 100 दिखाएगा लेकिन ये चीज़ PO2 देखेंगे तो उसमें वो ऑक्सीजन की परसेंटेज ज़्यादा दिखाएगा जो कि
अगर ज़रूरत नहीं है किसी। ठीक है, तो फिर आर ऑक्सीजन सैचुरेशन रीडिंग ऑलवेज एक्यूरेट? अगेन नॉट सो। पेरिफेरल फ्लो अगर एक्सट्रीम वाज़ोकंस्ट्रिक्शन, हाइपोटेंशन, हाइपोवोलेमिया, सेप्टिक शॉक अगर है, तो ऐसी कंडीशन में जो है फ्लो कम होगा और फिर ये जो है वो नॉट ऑलवेज एक्यूरेट। अच्छा, ये कार्बन मोनोऑक्साइड से की अगर पॉइजनिंग हो जाए या मीथेनग्लोबिनीमिया एक अलग एंटिटी, दोनों सूरतों में फिर ऑक्सीजन सैचुरेशन समटाइम मिसगाइड अस। कार्बन मोनोऑक्साइड क्योंकि उसकी अफिनिटी बहुत ज़्यादा है, जो 4 साइट्स हैं हीमोग्लोबिन को बाइंड करने की, जो ऑक्सीजन को बाइंड करती है, लेकिन उसी जगह पे कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाएगा अगर उसकी पॉइजनिंग है, तो फिर सैचुरेशन उसमें नॉर्मल आ सकती है, लेकिन पेशेंट में भी सिक। द प्रेजेंस ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड फूल्स द मॉनिटर इन रीडिंग द हार्ट। पेशेंट को पॉइजनिंग है, वो फ्लश्ड होगा, पिंक होगा, और however जो monoxide can't provide oxygen to the tissue and PO2 may be very low, may be। इस पेशेंट की जब देखी गई, जिसको पॉइजनिंग हुई थी कार्बन मोनोऑक्साइड की, ऑफिस में बैठा हुआ था, वहां पे आग लगी इनहेलेशन की, तो वो उनका फ्लश्ड और सोमनोलेंट स्टेट में जब आया तो पीएच उनकी ये थी, एसिडिक थी। अच्छा, वो अच्छी खासी पॉइजनिंग थी तो PO2 भी कम मिल रहा था और जो एस सैचुरेशन भी कम मिल रही थी, लेकिन ये एक जो इंडिकेटर जो बता रहा था कि ये कार्बन मोनोऑक्साइड की पॉइजनिंग है इस पेशेंट। तो वी नो कि इसकी ट्रीटमेंट है कि उसको एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर वाले ऑक्सीजन देते हैं, जिसको हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन कहते हैं। तो उसको जब 5 सेशन हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दिया गया तो ये इम्प्रूव हो गया। फिर आप देखिएगा PO2 और सैचुरेशन भी इम्प्रूव हुई और पीएच भी बेहतर हुआ। जब ये आए थे तो चेरी रेड टिपिकल कलर जो है कार्बन मोनोऑक्साइड पॉइजनिंग का। Is oxygen saturation can miss big problem like this? Yes. Why use it instead of PO2? क्यों नहीं हम PO2 ही चेक करें? PO2 इन्वेसिव है, और अगर फायदे देखें पल्स ऑक्सीमेट्री के, तो फिर ये नॉन इन्वेसिव है और इजीली जो है वो पोर्टेबल भी होता है और कंटिन्यूस मॉनिटरिंग होती है इसमें। वाइल ये जो हम देखते हैं पार्शियल प्रेशर, तो प्रिक की ज़रूरत होती है, ट्रेन बंदे की, और वो पेनफुल भी होता है, मशीन भी चाहिए उसके लिए। टोटल कार्बन डाइऑक्साइड ये बात करते हैं तो दैट इंक्लूड सीरम बाइकार्ब एज वेल, दैट्स इम्पोर्टेंट, एज वेल एज अवेलेबल फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के क्या है, जो डिजोल्व फॉर्म है वो कार्बोनिक एसिड है, तो दैट along with the bicarbonate make the total carbon dioxide. Generally, the serum bicarbonate comprise 95% of the total carbon dioxide content. ठीक है, तो thank you very much. Hopefully that has improved some of the concept. And if not, then you can write in the comment box and subscribe for the next video.